Hi students, in this video we will be discussing about logical abstract reasoning syllabus for our MCA entrance examination conducted in March 2024. Around 60 marks का वेटेज है for logical and abstract reasoning. चलो अभी देखते हैं कौन से टॉपिक्स नॉर्मली आते हैं लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. फर्स्ट टॉपिक इज द सेटिंग अरेंजमेंट. व्हाट आर द सेटिंग अरेंजमेंट? सेटिंग अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट in a specific order or a pattern. सर एक आधा एग्जांपल दे सकते हैं कि yes, in this video, in upcoming part, you will be finding some of the questions of the setting arrangement also. We have a critical reasoning. In that, we have to go for evaluating and analyzing information to make reasoned judgment and decisions. We have a blood relationship, that is the family tree, like father, grandfather. तो ये जो relationship का structure है, on the basis of that, some questions will be asked. That is the blood relationship question. Mapping questions are also there. They are like connecting the visualizing a relationship between the different elements of the variable. और भी कुछ टॉपिक्स है लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे, जैसा सिलोजिज्म है, दैट इज ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम अ गिवन प्रीमाइस यूजिंग द लॉजिकल रीजनिंग. काफी इंटरेस्टिंग है लॉजिकल रीजनिंग, वेटेज भी काफी ज्यादा है लॉजिकल रीजनिंग को. बट प्लीज याद रखना, क्वेश्चन कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न में आने वाले नहीं है. राइट, मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चन दिए हैं, पर इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना ही चाहिए. We have a coding decoding, that is the alphabetic question. We have a data sufficiency, that is logical reasoning based question. We also have a coded inequality, that is called as a comparison. Coded inequality में क्या होता है? That is analyzing the coded information to determine the relationship and make the comparison. And the last topic is your series, that is identifying the patterns and predicting the next element in a sequence of a number or an object. ये काफी इंटरेस्टिंग होता है. जितना हो सके उतना लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का आपने ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए. वेटेज कैसा है? देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि यही टॉपिक के इतने ही क्वेश्चन आएंगे, बट अराउंड अगर ध्यान दोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट का मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, 25 to 35 क्वेश्चन आ सकता है. मैपिंग का 5 क्वेश्चन होता है. ब्लड रिलेशनशिप का 5 क्वेश्चन होता है. क्रिटिकल रीजनिंग का डिफिकल्ट क्वेश्चन होने के चांसेस है अराउंड 20. सिलोजिज्म का 5 to 8 क्वेश्चन आ सकता है, इट इज मॉडरेट वन. कोडिंग डिकोडिंग के 2 to 5 क्वेश्चन. मतलब यहाँ पे जितना हो सके उतना ज्यादा वेटेज आपका है, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट एज वेल एज अ क्रिटिकल रीजनिंग. बट बाकी सब भी अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, then it is going to give you the good boost for your percentile in your MC. Now let's move ahead with some of the sample question of logical and abstract. So the first question I had considered that identifying the next item in a sequence like 2, 6, 12, 20. तो अगला सीक्वेंस में कौन से आइटम होंगे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिले हैं 28, 24, 30, 36. जरा सोच के देखो क्या आंसर आ सकता है. And if you had calculated enough, then you will find the answer is C, that is going to be 30. सर ये कैसे आया सर? मेरे आगे जाके लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा सा सीरीज आ जाएगा, उसमें आपको ये सब चीजों के बारे में हम लोग टिप्स एंड टेक्निक्स जरा देते रहेंगे, दैट विल हेल्प यू टू गो फॉर स्कोरिंग बेटर. इफ ऑल कैट्स कैन क्लाइंब अ ट्री and Fluffy is a cat, can Fluffy climb the tree? Options are yes, no, not enough information, only it's sunny. तो आंसर आएगा yes. तो ये कैसा हो गया? ये एक थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया. व्हाट कम्स नेक्स्ट इन अ पैटर्न लाइक स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर? तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट सर्कल आएगा, क्या ट्रायंगल आएगा, क्या स्क्वायर ही वापस आने वाला है, क्या पेंटागन आने वाला है? सो द आंसर कम्स एज व्हाट? सर्कल. ये सीक्वेंस है, काफी हद तक आसानी से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. मूविंग अहेड, the question is like arranging the following words in alphabetic orders like elephant, banana, apple, dog. मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझा होगा. द आंसर क्या आ जाएगा? एप्पल पहले आएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर ना, बाद में बनाना आएगा, बाद में डॉग आएगा और लास्ट में आने वाला है ए बी सी डी ई. राइट, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनको सबको अरेंज किया हुआ. इफ ए इज टॉलर देन बी एंड बी इज टॉलर देन सी, देन हु इज द शॉर्टेस्ट? अभी आप सोच के देखो, ए टॉलर है बी से और बी टॉलर है सी से, तो शॉर्टेस्ट कौन पूछा हुआ है? थोड़ा यहाँ पर ट्विस्टेड रहता है. बच्चे लोग क्या होता है ना, आप लोग थोड़ा सा सोचते सोचते कैलकुलेशंस तो मिस आउट कर देते हैं, आप ये वर्ड को भूल जाते हैं कि हु इज द शॉर्टेस्ट पूछा हुआ है, कि आप लोग गलती से ना वो टॉलेस्ट वाला ही आंसर देते हो. तो आप ऑप्शन दे सकते हो ए बी सी और नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन, दैट सी इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट वन. मूविंग अहेड,
one more question. We will try to resolve some around 13 questions in today's video. Identifying the odd one out, that is apple, banana, orange and carrot. अभी इसमें odd man out कौन है? अभी एक सिंपल सा बात है, एप्पल है क्या, बनाना है क्या, ऑरेंज है क्या, कैरेट है. अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज या फ्रूट्स है, तो डेफिनेटली who is the odd man out is going to be carrot. So the answer will be D. If today is Sunday, what day will be 2 days from now? आज का दिन संडे है, 2 दिन के बाद का दिन कौन सा होगा? मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेनेसडे होगा या फिर थर्सडे होगा? तो आंसर क्या आएगा आपका? डेफिनेटली ट्यूसडे ही आंसर आने वाला है. Which shape does not belong in the following group? स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ओवल. इसमें कौन नहीं आता है? तो अगर आप थोड़ा सा समझ के चलोगे तो आपके पास आंसर आएगा सी, दैट इज नथिंग बट योर ट्रायंगल. Right. So now this is what the way in which the logical abstract reasoning questions are being asked. Let's try to get some more questions. So one more question. Complete the analogy, that is cat is kitten as dog is to what? Puppy or a cub or a chick or a fawn. तो आंसर आएगा डेफिनेटली डॉग का क्या होता है? पपी होता है ना. सो ये थोड़ा सा आपका इंग्लिश में भी थोड़ा सा ब्रिटिश होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व इट. तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में और लॉजिकल रीजनिंग में, उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक और स्पीड थोड़ा बढ़ते बढ़ते जाएगा. बट रिमेंबर ऑलवेज, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन स्टार्ट चूजिंग द ऑप्शन. If all roses are flowers and some flowers fade quickly, can roses fade quickly? Then what is the answer? It is yes or a no, not enough information, only if they are red roses. So the answer will be C, not enough information. Moving ahead, A, B, C, D and E are sitting in a row. A sitting arrangement वाला question. If C is sitting between A and D, who is sitting at one end of the row? तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा जंबल हो सकता है, थोड़ा सोचो, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो, हो सके तो अपना नेक्स्ट वीडियोस को देखो बराबर से. ओवर देयर आई विल बी टीचिंग यू दैट हाउ टू गो फॉर सॉल्विंग द सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन. हर एक टॉपिक पे मैं एक छोटा छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ, दैट विल हेल्पिंग यू टू गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. And answer over here is going to be E, and definitely the answer is going to be what? E. E is what? Nothing but sitting at one end of the row. Moving ahead, if a circular sitting arrangement of 6 friends, if A is sitting 2 places to the right of B, where C is sitting? तो यहाँ पे सोचो आप, to the left of B, 2 places to the left of A, opposite of A or next to B. I think so given a good thought about it. थोड़ा पॉज करके देख सकते हो वीडियो को, अपना थॉट दे दो और बाद में मेरा आंसर सुनो. एंड द आंसर कम्स एज अपोजिट टू ए. Let's move ahead with the last question for today's video. If Alex is the brother of Emily brothers, what is Alex to Emily? Brother or a cousin or an uncle or a father? पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सा सोच लो and please find out your answer, and the answer comes as what? Nothing but a uncle. So now this is what a small understanding about the logical and abstract reasoning I had given you. Upcoming videos will be there, so please share this particular video, like this video, please click on a bell notification icon and share with your all friends who are interested in doing the MCA entrance, who are appearing for the MCA entrance. Thanks a lot.